Valley of Flower. ये व्यू पॉइंट है, कोहरा छाया हुआ है, थोड़ा बारिश का मौसम है। सरदार वल्लभ भाई पटेल। जय हिंद, जय भारत, श्रेष्ठ भारत, एक भारत। हेलो गाइस, अभी मैं वैली ऑफ फ्लावर में हूँ और यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है, तो यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। बड़ी है। हाँ, वेयर आर यू फ्रॉम? खेरवाड़ा, राजस्थान। उदयपुर। उदयपुर। हाँ। चले सर। अभी मैं जा रहा हूँ नौका विहार के लिए। बस में बैठ चुका हूँ और अब नौका विहार के लिए जाऊँगा। 2:30 बजे की मेरी नौका विहार है।
वहाँ पहुँच के टिकट दिखानी पड़ेगी, फिर नौका विहार करेंगे, फिर वहीं मिलते हैं आपसे। नाइस व्यू ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी। देकर झुकना थोड़ा जोखिम भरा है, तो इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। और बोट पे कुछ भी खाना पीना अलाउ नहीं है। अगर आप वाटर बोतल कुछ यूज़ कर रहे हैं तो पीछे डस्टबिन रखेगा, उसका इस्तेमाल कीजिए। और साथ ही में इस बात का भी ध्यान रखिए, अगर अपनी सेल्फी क्लिक कर रहे हैं तो आपका जो हाथ है, मोबाइल जिस हाथ से आपने मोबाइल पकड़ा उसको थोड़ा अंदर ही रखिए। तो क्या है ना, बाई चांस अगर आप सेल्फी क्लिक कर रहे हैं, अगर आपका फ़ोन अगर हाथ से छूट गया तो आपका जो सेल्फी है वो तो बहुत बढ़िया आया होगा, मगर आपका फ़ोन अगर पानी से गिर गया, अगर हाथ से गिर गया तो फिर दिक्कत हो सकती है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर अरबी समुद्र को मिलने वाली माँ रेवा का एक मुख्य भाग है, और इसी से जन्म हुआ है सरदार सरोवर का। और इस सरोवर के एक गाँव हुआ करता था। नौका विहार चल रहा है, और वो बता रहा है कि इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ भी होते हैं। अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो मगरमच्छ भी दिखाई देंगे। ये 40 मिनट्स की राइड है, बहुत ही खूबसूरत, फंटास्टिक। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो इसको बिल्कुल स्किप मत करना, बहुत अच्छी जगह है देखने के लिए।
वाले गेट जो कि डाइक नंबर 3 और डाइक नंबर 4 के वाटर लेवल को मेन और आप जो बिल्कुल अपने सामने देख पा रहे हैं वो है टेंट सिटी 1। और अगर आपने साइकिलिंग की टिकट भी बुक की हुई है तो आप इसी रोड से होते हुए साइकिलिंग करते हुए बाई टेंट सिटी जा सकते हैं। और आपके राइट हैंड साइड जो आपको छोटी सी बर्ड जो दिखाई दे रही है जो फ्लाई कर रही है, अभी आएगी वो बर्ड काफ़ी फ्रेंडली होती है और उस बर्ड का नाम स्पेलो है, जो कि एक दिन में 500 किलोमीटर तक डिस्टेंस ट्रैवल करती है। और उस बर्ड का दूसरा नाम स्विफ्ट है, जो कि आप सबको पता होगा कार का नाम है, वो इसी बर्ड से रखा गया है।